Right, guys. So before explaining to you these two questions, एक ये lake वाला and one more question of science, there was general science. I want to take the doubts in the other 48 questions. Samakshi? Sir, four doubts I have. Firstly, sir, the 49th question itself. Am I audible, sir? Yeah. So in the 49. 49th question. Sir, इसमें Australia group is actually an informal agreement, Okay. factually speaking. Okay. So sir, can we answer this question based on like deep fact? Like there are too many facts in like to know No, कि if it is an informal agreement, then I am wrong. Then my approach is wrong. Okay. It is a standard. Yeah. If it is an informal, then my approach was wrong. And I told you, and why did we go wrong? Because this is a standard fact question, ought to be done out of knowledge, right? So this is evidence कि ज्यादा push करोगे तो गलत हो जाएगा. But तो sir, फिर a standard fact usually wrong भी तो हो सकता है because OECD is wrong here. So why that's not? okay. That's okay. The thing is, this you have to sense what level of standard fact it is. It is not like that geostationary का 22,000 किलोमीटर का fact. It's not of that tucha level. This is an important thing which was in news. So you are supposed to know something about it, and then if you say कि यार OECD नहीं सुना है, then SFUW okay, fine, because a lot of facts are there and OECD नहीं सुना है, then okay, but मेरी तरह बिल्कुल जीरो नॉलेज से करोगे तो ऐसे ही गिरोगे. वो इनफॉर्मल है और वो गलत हुआ. ठीक है. So this you can take it as a lesson. Should not use techniques without this thing. I was lucky, got it right. Yes, sir. But the approach was wrong. It is not because of informal, it's because of OECD. So I never went till OECD actually. Right. So this is the thing, like I became gamma in the land of llama. Okay. Partial gamma. तो नहीं करना है, ऐसे गलत होगा. हाँ. Hello sir. कौन बोल? हाँ दीपक. Sir, I have some approach in this question. दीपक 49. नहीं, अप्रोच मतलब क्या, आंसर आया या नहीं आया? Yes, sir. Although I leave this question while attempting, but अभी डिस्कशन के दौरान मेरा OECD पे ध्यान गया था. उस टाइम शायद मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था टाइम प्रेशर में. सर इफ आई लाइक वुड हैव हर्ड वाला अपना सकते कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे OECD इज वेरी फेमस. सेम चीज. OECD से ज्यादा जरूरी है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार, ये सब MTCR जो हैं, these are more important than OECD. OECD का मेनली फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उस पे चीजों पे होता है, वासेनार का मिसाइल्स वगैरह पे होता है. राइट. यू कैन रिलेटेड नॉट रिलेटेड हो गया. नहीं, रिलेटेड नॉट रिलेटेड भी अग्रीड हो सकता है. अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएसए सपोर्ट कर रहा है इंडिया मेंबरशिप को, और यहाँ पे कह रहे हैं प्रीडोमिनेंटली ऑफ एशियन, तो एशिया में दो ही ज्यादा, एशिया में जो पावर है वो इंडिया और चाइना ही है बेसिकली प्रीडोमिनेंट. तो यूएसए की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती अगर प्रीडोमिनेंट एशियन है. कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हो? सेकंड. comprises Australia group comprises predominantly of Asian, African, North American countries, whereas I'm focusing till Asian. नहीं तो नॉर्थ अमेरिकन भी बोल रहा है ना? नहीं हाँ सर बोल रहा है, मगर अगर एक वर्ड भी यहाँ पे गलत निकल गया तो स्टेटमेंट गलत होगी ना? नहीं, वो अप्रोच ठीक नहीं है. नो, ऐसे नहीं कि जस्ट एक वर्ड गलत. हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज नहीं हम कहीं सुनते हैं. इफ we know that Australia group is important and in any important body if you think about, हम कभी ये नहीं सुनते कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आर देयर. ऐसे नहीं होता ना, कंट्री के नाम के साथ सुनते हैं. या G7, G8, G20 ऐसे सुनेंगे, राइट? तो वो अप्रोच अगर बोलोगे मैं फिर भी मानूंगा, बट अदरवाइज की जस्ट बिकॉज 3 नेम्स आर देयर कोई ना कोई गलत होगा, नहीं, ऐसे नहीं यार. स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है. तो ध्यान से वो करना है. ये नॉलेज से बना ही, ET से बना ही नहीं है ये क्वेश्चन करने के लिए.
Okay. right? हाँ So that's सत्या, why I leave. Although I leave हाँ that ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सत्या. बट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी तो होगा प्रीडोमिनेंट. नहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप comprises predominantly. It is not saying dominant country कौन सा है. It is saying which अच्छा. region. Australia is just one of the countries, ना. भानु. Yeah, hi, sir. Hi. So I have a doubt in question number 35 first. 35. And statement number 3, which says that to provide emerging and eco-friendly food processing technologies to entrepreneurs, sir. Which is, sir, have to be, sir, क्योंकि because government, sir, entrepreneurs को तो provide करेगी ना, sir, कोई भी technology अगर हो रही है या mega food parks अगर बन रहा है तो टेक्नोलॉजी देने का काम ऐसा मेगा फूड पार्क या SEZ जैसी जगहों का नहीं होता ना भानु. टेक्नोलॉजी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं? स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही टेक्नोलॉजी में डील करने का है वो देती है ना. जो काम, अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट if the objective of the scheme is to provide good infrastructure, which seems to be highly likely, given the name mega food parks, 1 and 3 are not complementing, they are not matching, they cannot be in one answer together. Sir, if government is providing infrastructure, then sir, second step it's to be, sir, emerging technologies also providing, na, sir. यार वो स्पेशलिस्ट जगहों का, स्पेशलिस्ट संस्थाओं का काम होता है ना. कैन यू थिंक, चलो लेट अस सी, लेट अस ट्राई टू think of some scheme which is doing what the first statement is saying and the third statement is saying. किसी भी sector में, let us think of some common, like well-known popular scheme. Can we think of? Let us see. No, we cannot. But sir, मैं इसको ऐसे, जैसे सर आप जैसे इसको इसका पाथ चेंज करो. जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अगर कहीं स्कूल बनाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, देन उसने वहां पे कंप्यूटर सेट्स लगाए तो वो टेक्नोलॉजी हो गई. अरे यार, कंप्यूटर सेट्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है. The technology means you are dealing with the latest technology to provide. You read the third statement. What is the energy of the third statement? To provide emerging and eco-friendly food processing technologies to entrepreneurs, right? Emerging means the latest technologies. तो ये काम तो specialist organizations का होगा ना. Industrial CSIR की organizations की होती है ना. CSIR सुना होगा तूने. उनका जॉब ही इस टाइप का काम CSIR करती है ना. ओके. अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोली है. बट सर मतलब इसका अंदर ये भी था कि ये एकदम सॉफ्टली वर्डेड है काफी, इतना कुछ वो ट्रिपी सा है नहीं सर. इसके अंदर काफी सॉफ्टली वर्डेड है, इसलिए सर मुझे लगा कि ये माइट बी ट्रू होगा. एंड नहीं, बट दैट इज व्हाट द कैच हियर ना. मेगा फूड पार्क, अच्छा चलो लेट अस सी, इज मेगा फूड पार्क सिमिलर टू ये इकोनॉमिक जोन SEZ, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इससे क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना. स्पेशल इकोनॉमिक, इज इट सिमिलर टू दैट? मेगा फूड पार्क, नो, माइट बी सर. मेगा फूड पार्क, तो फूड पार्क क्या हुआ? फूड पार्क मतलब यही हुआ ना. सर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये पढ़ा है, मेगा फूड पार्क व्हिच इज नियर टू द हाईवेज फॉर प्रोवाइडिंग बेटर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग बेटर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर सर मुझे पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया है बिकॉज सर लॉजिस्टिक्स को सही करना था और हाईवे के नियरर बनाएंगे ताकि एंटरप्रेन्योर्स फटाफट अपना माल डिलीवर कर सके और प्रोवाइड करा सके. हाँ. तो टेक्नोलॉजी नहीं सुना ना. अगर तुमने लॉजिस्टिक्स सुन लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सुन लिया, और ये लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ दिस थर्ड स्टेटमेंट, ये कुछ बहुत नीश बात तो बोल ही नहीं रहा, सिंपल लैंग्वेज में बात बोल रहा है. तो अगर ये होता तो तुम्हारी मैगजीन से तो होता ना. हाँ होता. तो इसको क्यों छोड़ेंगे फिर? सौतेला व्यवहार क्यों? ये भी सही है. ये स्पेशलिस्ट काम है, ठीक है. Okay. And sir, I have one more doubt in question number 18, sir. When the bark of the tree is removed in a circular fashion, all round. वो मैं डिस्कस करूंगा उसको. सारे डाउट होने दो फिर करूंगा. सत्या. That's it, sir. I have only two, sir. Thank you, sir. Satya, yeah, tell me. Sir, I have a doubt in question number 21. 21.
Yeah, tell me. Sir, you said here that the polar ice have been trapping air since before only, so we won't consider that point. So, but like photosynthesis by phytoplankton is also like from past so many years. But that is still an active thing, right? Have you heard of photosynthesis or not? Yes, sir. You have heard of, right? And polar ice trap, if it has trapped the ice, it will then, that means it is sequestered. So now it is, why is it becoming a problem? Because that old gases which are trapped in that ice, they are now on the verge of being released. That is why is the problem. It is not something which is like, okay, let's look at the vibe also. Polar ice cap is in the positive sense in news and climate change or negative sense? Negative sense. Negative sense. The question is talking of positive sense, right? So should not be in the answer. Okay. Polar ice caps are like in the negative, like they're damaging the environment more, right? So, and the question is asking positive, like how, why is it? The question is, yes, the question is saying, why is it not in the atmosphere anymore? So positive. So it should not be in the answer, right? What else? सर इसमें ऐसे इसको डील कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 3 है वो पोलर पे फोकस कर रहा है, मतलब व्हाई नॉट नॉर्मल आइस कैप या नॉर्मल आइस, स्पेसिफिकली पोलर के लिए नहीं, देखो बोला हुसैन, the thing is I think यहाँ you went too narrow here. Generally in the context of climate change, polar ice caps तो सुनते हैं ना सर। जैसे अगर आइस कैप की बात करें तो जनरल रहता, और जैसे हिमालयस में भी यार। आइस नहीं कैप कवर नहीं, तुम बताओ हुसैन, तुम बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तुमने पोलर आइस कैप सुना है या नहीं क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में? ये सर सुना है, वो तो हमेशा तो फिर क्यों उसको आंख बंद कर रहे हो जबरदस्ती? पोलर, वही तो पोलर एरियाज, पोलर आइस कैप्स एक ही तो बात कर रहा है। और सर जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसमें भी थोड़ा आउटर पे उन्होंने एडजेक्टिव ये लगाया, would have आउटर heard, स्टेटस। अरे would have heard। अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही, a lot of it does not remain in the lower atmosphere, right? A lot of CO2, majority of CO2, right? Yes sir. That means whatever happens to it, some way you should have heard of it, right? You would have heard of it. Yes sir. So we hear of the sea phytoplanktons also, we hear of polar ice caps also, but we never hear of stratosphere. तो वो तो straight away हटाओ, stratosphere कभी नहीं सुनते ना। Yes sir. वो हटाओ। But now the case is the third statement is negative and the question is positive. The vibe is not matching. That is why third should not be in the answer. Yes sir. ठीक है? Not other way. Yes sir. Broadly सोचना है। तुम बहुत नैरो सोच रहे हो अभी, सिर्फ पोलर पे गेम थोड़ी कर रहा है यूपीएससी यहाँ पे। Other than polar, you have what? Third pole. That's it. Third pole is this Himalaya, Tibet region, right? इसको छोड़ दिया, अगर इसको भी हटा दिया जाए तो आइस कैप तो है ही कहाँ? तो बहुत थोड़ा सा शेयर चंक हो गया ना। एंड आइस की बात कर रहे हैं, स्नो एंड आइस में फिर वही बात है, फिर वही स्नो पीक्ड, स्नो कैप्ड माउंटेन होता है, आइस कैप्ड माउंटेन थोड़ी लिखते हैं, है ना? तो वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, शुड नॉट नीड। ओके दिव्यांश। गुड इवनिंग सर। हाय दिव्यांश। सर 11th क्वेश्चन में एक डाउट। सर रिलेटेड नॉट रिलेटेड नहीं होना चाहिए सर। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 73rd अमेंडमेंट तो बिल्कुल विलेज लेवल पे बात करते हैं पंचायत की। नॉलेज के दम पे ही बोल रहे हो ना तुम, नॉलेज के ही तो दम पे। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज थोड़ा सा एलिमिनेशन। मैं ये कह रहा हूँ, नॉलेज हो तो तुम दुनिया जीत जाओगे यार, नॉलेज हो तो कर सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज देन दिस क्वेश्चन इज टू स्टैंडर्ड, यू कैन नॉट डू इट। वासेनार वाले में तो फिर भी नहीं, वासेनार वाले क्वेश्चन में तो फिर भी हमें फील आ जाएगा कि यार शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। इसमें तो आएगा ही नहीं यार, इसमें तो मतलब इसमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि 73rd amendment was dealing with panchayats. Yes, which aims at Panchayati Raj. Actually, it is given also, which aims at Panchayati Raj institutions. Okay, then what? सर मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज थोड़ा अर्बन लेवल पे आ गया और पंचायती राज हमारा रूरल लेवल पे आ गया। Yes, agreed.
तो फर्स्ट गलत होगा, और सब मैंने फिर देखा फर्स्ट जो है वो 74th अमेंडमेंट से हो रहा है, जो अर्बन लोकल बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं। इसका आंसर क्या है? सर 1 गलत है ना, इसमें सी आंसर है, 2 और 3। आंसर सी है क्या इसका? सी है या डी है? So given answer is D, Hmm. but even I think that statement 1 is wrong. There's a problem in the official answer key, according to me at least. सर Then वैसे एक बार सी चेक में कर लो, एक बार चेक करो, है ना, अच्छा, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की गलत है, बिकॉज आई हैव डी एज द आंसर। जस्ट चेक 73rd अमेंडमेंट एक्ट का डॉक्यूमेंट पीडीएफ डाउनलोड करो, सर्च फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज इन दैट। ओके, देख लिया, नहीं है। नहीं है? नहीं। Sir, it isn't there. I studied. इज इट देयर? Yes, sir. चलो, देन वी डोंट नीड टू। Article 243 ZB. Yeah, yes, sir. So Yes, sir. article- Yes, sir. No, but which amendment? The thing is हाँ, about amendment. 73rd No? or 74th? We So need to open the 74th. amendment document, and the 73rd amendment document, DPC is not mentioned. It's in the 74th amendment. So 74th amendment में DPC। अच्छा, आर्टिकल में तो होगा ही तो amendment. यूपीएससी 74th ओके फाइन देन, बट मतलब देखो, नॉलेज अगर है तो ठीक है, बट मैं पर्सनली तो ऐसे क्वेश्चंस को टच ही नहीं करूंगा। ओके, इट इज ठीक है मतलब सर। थोड़ा सा ये ज्यादा नॉलेज हैवी टाइप का है। यू शुड मतलब जनरल लाइक दैट इज नॉट माय हैबिट कि मुझे अगर कुछ ना कुछ तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज टॉकिंग विद रेगुलेशंस, बिकॉज इट इज टॉकिंग विद लॉज, वी कैन फील द वाइब, इट इज वेरी फैक्चुअल, वेरी स्टैंडर्ड। सो हो कुछ भी सकता है यार, मतलब यू नो, तो बाकी पर्सनल कॉल है, पर्सनल कॉल है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट की पंचायत की प्लानिंग नहीं हो सकती, इट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मतलब पता नहीं, मैं इसीलिए नहीं लूंगा, मतलब दिस इज जस्ट टू स्टैंडर्ड फॉर मी, आई विल नॉट टेक अ ओके सर। कॉल इन दिस क्वेश्चन। सर अगला डॉट 20th क्वेश्चन में 20 में सर इसमें स्टेटमेंट 6 है, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सर ये बहुत नैरो जा रहा है, इसमें कहे कि इनमें से क्या क्राइटेरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए हुआ है। सर वार्म एंड ह्यूमिड नहीं होगा हॉटस्पॉट के लिए, क्योंकि ये तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसको हटाते ही हमारा आंसर आ रहा है। वो भी ठीक है, अच्छा ओके, तो सही है ना ये? हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। देखो दिव्यांश, जब तक आंसर सही आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सर। इनफैक्ट आई वुड encourage you to not share your approach till the time you are getting the right answer, because then this will make others think on different lines and कहीं confusion ना हो जाए उनको, ठीक है? बिल्कुल सर। हाँ, अगर आंसर गलत आ रहा है तो बताओ। नहीं सर, गलत नहीं आ रहा, फिर तो सर सब में सही आ रहा है। मैं एक बार वही अपनी वो बता रहा था सर, जैसे 30th क्वेश्चन में। पर्सनली बता देना, बट ठीक है सर, कॉल पे इफ यू फील अगर आंसर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। द थिंग इज that is the beauty of our style of elimination. It enables you, it allows you to think in your own different ways, and all of us have got our own strengths and weaknesses, so we will have some differences in our approach. हाँ, एक ऑब्जर्वेशन वो करनी थी सर, जैसे हमने वो PM15 वो वाला सुना था, आपने कहा था वो स्टैंडर्ड फैक्ट है बिल्कुल सर, बट अगर हम एक ट्रेंड नोटिस करें PYQ में, जितनी भी मतलब 95% गवर्नमेंट के बारे में अगर अच्छी चीज लिखी है एक पॉजिटिव वे में, तो सर वो सही हो रही है। और इसमें भी हमने अब तक यही देखा है, PWD वाले में देखा है, और PWD वाला कौन सा? तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला। अच्छा ओके। और PM15 सर की PM का एक 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें माइनॉरिटीज के लिए सर, मतलब एक पॉजिटिव। दिव्यांश, I actually would not go that route कि गवर्नमेंट के बारे में पॉजिटिव लिखा है तो करेक्ट होगा। There are other things, more मतलब stronger reasons why you should go for some options or why you should not go for some other options, ठीक है? मेरा डाउट ये है कि PM15 वाले में डिजायरेबिलिटी यूज कर सकते हैं यार, जब हम डिस्कस करेंगे दिव्यांश तब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर। अभी लेट अस रिस्ट्रिक्ट फिर टू तो हाँ, 350। ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड थैंक नाइट, यू, थैंक ओके। यू। स्पर्श। Yes, sir. Sir, in question 27, sir, why is the second statement incorrect? Because as far as I have heard, radio waves belong to the longer wavelength category only. Is this a reason why ionosphere facilitates radio communication?
Also, we have to link it with the question, not with the knowledge given in the statement. Yes, the primary thing is to answer the question. The question is, why does ionosphere result in radio communication? That is the question. And this is a standard fact question. You would have heard the reasons why. Why? Because ionosphere, it reflects, like, that is the reason, right? That is what we have heard. Okay. So statement 2, even though the knowledge is right, it would be wrong because it's not related Not to the in the question. yes, that's why I said related, not related approach. Okay, and other doubt is in 42. Why is the statement 2 is, we have said it's incorrect to plug the vacuum created by the termination of Cold War. It could be one of the reasons because after Cold War, the area that was affected was primarily You the have East heard, Asia. wouldn't you have heard if India wanted to, plug the vacuum created by the termination of, is the Cold War in our foreign policy objectives like an important, have you heard of anything related to Cold War, plugging the vacuum, or, have you heard of Cold War in the context of Indian foreign policy objectives? No, sir. फिर नहीं होगा, But the main aim was there was a vacuum that was created after the Cold War in this area, so it might be one of the reasons. Would have heard, might be. This is the reason why elimination works. If it might be, is it not important enough that it will be mentioned in the books then? Okay. Right? Would have heard. And can What you just about the third statement in the same question? एक second, Sparsh, I'll come to you, Sangshi. हाँ, Sparsh? No, it was another question, just last question. It was in the 21. I was just asking can you explain again the polar ice caps? Why is it wrong? I'll explain. हाँ, Sangshi, you're saying something? Sir, in the same question, my confusion is with the third statement. India wants to restore the historical and cultural ties. So aren't we again, like, उसके ऊपर question था geostrategic India, वो Southeast Asia वाला. There we are like, it's talking about the past. So that is not correct. But here also, sir, we are going to the past, right? Historical ties. But is it? नहीं, don't we want to restore historical and cultural? Is it not in sync with the foreign policy objectives that we have? We have a like soft kind of objectives, right? Panchsheel and सबको साथ लेके चलो, non-aligned movement, all of that, right? वो तो है सर, but we don't write like this ना कि historical and cultural ties restore करने neighbors के साथ. वैसे formal ऐसे लिखते. Okay, then the other statement will be India does not want to restore the historical and cultural ties. Right? Sir, these statements are mentioned in the UN standard. They want to have strengthen the cultural ties. देखो ये इस type के जो statements होते हैं ना, they may not be like very officially like kind of words not be having, but you have to go for the vibe of the statement. Is the vibe not matching how we want to conduct our foreign policy? That is right. And instead, and in fact, second statement ka vibe is not matching that, because the second statement has got very big brother kind of vibe, right? Second was a Cold War related, तो हम कुछ बोलते ही नहीं, मतलब खाली नाम पर छिलके. So vibe भी देखोगे तो second का vibe and third का vibe are very different. Second is like very मतलब bossy type of statement, and third is very inviting, friendly, amicable तरीके से, right? That is what we want to do. Okay, sir. ठीक है, sir. Got it. Thank you, sir. Yeah, thank you. The 21 question का बताएं, तो polar ice caps वाला क्यों गलत होगा, मतलब तुम क्या समझे अभी तक उसमें? तो वो ये कि it is trapped for centuries, not in the recent past का नहीं है ये बहुत पहले से हो रहा है. Also हाँ, also vibe देखो, हमारा जो climate में whenever we have polar ice caps mentioned, is it in terms of like threat that they will worsen climate change, or is it in the context of helping with managing climate change? So melting of polar ice caps is seen as a threat because it will increase the warming. Yes, so polar ice caps actually are in the context of melting only, na? Yes. Not trapping. Trap तो जो कर लिया वो कर लिया. अब जो trapped है, we don't want that to release into the atmosphere, right? That is why these are in news.
Okay. Sparsh? Yeah. Yeah, I was just a little confused about this trapping wala part. Okay. So is it clear now? Yes, yes. I सर think सॉरी all टू इंटरफेयर सर, एक चीज इसमें सर वुड वर्ड लग सकता है पोलराइज कैप ट्रैपिंग में, हाँ लग सकता है है, ना? वुड वर्ड है नहीं? लग जाएगा। हाँ स्पर्श। Excuse me, sir. हाँ okay, sir. बस यही क्लियर था, thank स्पर्श, you. इज इट क्लियर? या थैंक यू। Yes, yes. हाँ दीपक। सर भी जो 11th क्वेश्चन में बात हुई ना, 73rd अमेंडमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, देयर इज अ पॉइंट इन अ बुक लक्ष्मीकांत फिफ्थ एडिशन कंपल्सरी प्रोविजन में, establishment of panchayats at the village level, intermediate level and the कोई district बात level. नहीं दीपक यार, ये जो क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो जाए ना, तो उसमें अगर सिर्फ फैक्चुअल एविडेंस है, मेरे को मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज देना, I'll go through it and if it is answering the doubt I'll put it in the channel, ठीक है? अभी सबका टाइम, we cannot cost everyone's time for these things, ठीक है? Okay. Thank you Deepak, thank you. Whose doubt is resolved, please lower your hand. Sparsh, is your doubt resolved? Yes, sir, yes. Please lower your hand, thank you. Sunil? तो मेरा 30th क्वेश्चन में एक डाउट था आम आदमी बीमा योजना. So I have a doubt wherein you said that it is a multi-statement question and it is an unknown scheme. I mean generally. मतलब ठीक है, मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना स्पेशली थर्ड स्टेटमेंट बोला है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. Right. फर्स्ट एंड सेकंड फिर भी पढ़ लेंगे. हाँ. Yeah, you said that it is a multi-statement question. So it cannot happen that all these statements will be a standard fact. Yes. So Most can you likely it will not. elaborate on it thoda sa aur? I'm saying government, if UPSC is making a multi-statement question on some scheme, right? Right. If the intention is to test your knowledge, then you tell me, you have done so many questions now, you tell me, what do you feel? Should that question be in one statement or two statement or three statement form or multi-statement? Three or If it multi-statement? wants to check our knowledge, then it should be one statement or two statement. One or two statement, right? In Right. three or more statement, it will not check just the knowledge, yes or no? Correct. So that means there's a very high chance that some of the statements will not be standard facts. Matlab they will not come from your knowledge domain, right? Okay. So there you have to see, you have to think on the desirability angle. You have to see in the context of other statements where things are complementing, where things are conflicting, all of the experience that you have had with the laws, schemes, policies related questions, all of that experience you have to use in those questions. So are you saying that we need to think more on three multi-statement which are like non-standard? मतलब think more की बात नहीं है. The thing is we have to realize that most likely these questions will not carry all just known domain standard facts. Okay. So okay, sir. I got it. Yes. We need to just think thoda sa broad and all. Broad desirability वाले angle से सोचना, and this is why I've given that tag also in your ET research channel. Okay, policy LPSC करके, I think laws, policy, schemes, etc. करके tag है. Just press that tag now if you have done all the mocks from 2011 till 2022. So you have to do all questions tag wise now. ठीक है ना? तो वो इसी काम के लिए बनाया हुआ है कि अब वो उनको स्टडी करना है वैसे. So you'll see the commonality, differences, approaches, all of that. Okay, sir. Got it. Thank you. Yeah, thank you, Sunil. Shivani? So in question number 41, Mahatma Gandhi National Monument. सर मेरा आंसर तो करेक्ट हुआ था इसमें, लेकिन आपने बोला ऐसा क्वेश्चन को लाइक लीव कर देना चाहिए. लीव मतलब स्टैंडर्ड फैक्ट से करना. दिस इज स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन. हाँ. फिर सर मुझे ये वुड हैव हर्ट से लगा कि हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कैटेगरी तो दिया है ना, ये तो कभी सुना ही नहीं. वो तो सबके बेटरमेंट के लिए हो सकता है, वहाँ पे कहीं ये तो नहीं लिखा कि शिवानी सिर्फ किस्मत थी कि वुड हैव हर्ट से ये क्वेश्चन हो गया. जस्ट लाइक किस्मत थी कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वाला फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सॉल्व हो गया, बट अप्रोच गलत था.
मैंने वो क्वेश्चन में भी बोला था कि स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है, शुड नॉट यूज। और इसमें भी मैंने यही बोला है, स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस इज टू टेस्ट योर नॉलेज, राइट? Yes, sir. And these are just 30 questions in the paper, around 30 questions. So ideally we should do them via knowledge only, है ना? Yes, sir. हाँ, तो इस Yes, टाइप sir. के क्वेश्चंस में मत यूज करो एलिमिनेशन, बिकॉज वो हमें एक फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है, and then that false confidence will cost us accuracy tomorrow. If it is a standard fact question, it is meant to be done via knowledge, just don't do it via elimination. ठीक है? Unless it is SFUW kind of course. SFUW kind of है तो ठीक, but otherwise knowledge से करो, because that is what the demand of the question is. Okay, sir. So question 44 में अगर not नहीं रहता, it is just about like fundamental duties में से कौन सा है? फिर standard fact, फिर knowledge, can't do it without that. Sir, instead of public election अगर वहाँ पे national anthem related कुछ होता तो फिर क्या कर सकते थे? Knowledge, मैं बोला ना, अगर not नहीं है तो knowledge ही चाहिए. Okay, sir. Not हटाते ही sir, you will need to know the list of ये. In fact, there was one more question. I'm not recalling the format, but the statement was to protect the weaker sections. To protect the weaker sections, ऐसे करके कुछ था. एक question था fundamental duties के ही ऊपर. Let me just see if I can find that question. To protect the weaker sections. Protect the weaker sections. हाँ, this is 2012 का 59th question. ओके, चलो इसको भी मैं भेजता हूँ, तुम्हें ग्रुप में भेजता हूँ. सर इनिशियली जैसे जो भी टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो वो मुझे थोड़ा सा लाइक फ्रेश लग रहा है कि चलो इनिशियली जब सीखा तो क्वेश्चन तुरंत लाइक सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ सर वैसे वैसे ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कौन सा है इसमें, ये आइडली नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा सर सॉल्व करते समय हो रहा है. I'll talk with you after the class about it. Okay sir. ये personal problem. That yes, बस इतना ही, nothing more than that. Okay, thank you Shivani. तो 47th क्वेश्चन एक सेकंड साक्षी, ये क्वेश्चन मैंने भेजा है, देखो गाइस. 59th question I've sent in the main ET channel. Which of them are amongst the fundamental duties? देखो, similar question 2011 में आया था, अभी जो किया हमने vote in public elections. The only difference is this was a one statement, this is a multi-statement question. Here, look at the second statement: to protect the weaker sections from social injustice. Again, problem. If you think about it, if you say this is such a wide, vague statement, right? From social injustice, तो लड़ाइयाँ ही हो जाएंगी. I mean, हर जगह फिर वही हो जाएगा. This is dependent on my interpretation, your interpretation of what constitutes social injustice, and also what is a weaker section, right? These kind of things are not generally in the Constitution will not say these kind of things. It will be very clear, very you know, क्या बोलते हैं उसको? What is that word? Unambiguous, very clear. Okay. हाँ साक्षी, आप बताओ. बस इसमें जो 47th क्वेश्चन है, the statement says upwelling in the seas. So I had got very confused कि upwelling हमने कभी इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना है. So I know it is incorrect to assume कि upwelling होता ही नहीं होगा, but सर थोड़ा सा confusing ये वाला statement लग रहा था, because upwelling भी here in terms of El Nino, La Nina, तो इंडिया के आसपास के सीज में हो सकता है ना साक्षी, कहीं ना कहीं तो हो सकता है ना. This is a natural phenomenon, it can happen, right? This is no reason to get doubtful in this question. Upwelling, this is a straightforward question. In the sea waters of India, the stress of the question is on the reason behind harmful algal bloom, right? And you know that upwelling is a reason for algal bloom. Yes. Across the world, har jagah. And this is nature.
जो पोलर एरिया में काम करेगा वो यहाँ भी तो काम करेगा। ये तो रीजन ही नहीं है इसको डाउटफुल होने का। सर थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी होता है तो उससे होता है इंडियन ओशन में। हाँ थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता है तो उससे हाँ थर्मोहेलाइन में वो क्या तुम्हारा वर्टिकल वो बेल्ट है ना, क्या अटलांटिक मेरिडियनल ओशियानिक का पार्ट है थर्मोहलाइन का। हाँ तो इसका तो टेंशन ही नहीं लेना। हाँ प्रभा। So question 45. I was stuck between C and D, and I can now see. So basically, I face a lot of resistance to mark D because nota hai. So wo resistance, I can see now that resistance could have been biased, like a mechanical bias, but just want to prevent this in the future because I settled with C and I marked C because I thought it was, you know, soft and wide, and somewhere maybe it can end up helping with transparency. It should be wide, right? I mean, would have heard if it is so basic, let us say basic, हाँ तो book से mention होगा ना? It would be one of the top objectives. For sure, because of its basic nature, right? ठीक है. So sir, I also face the same problem. नोटा के साथ नहीं जाऊंगा, सी मार दिया। अब नहीं देखो, तो इसमें लेसन ये है कि मैकेनिकल बायस नहीं होना है। The thing is you have to take the question for what it is, not because just nota is there. ठीक है, देखो ये bias रोकना is very hard, understood बात है, ठीक है, लेकिन if the question is standard fact, can we sense that it's a standard fact question? Yes. Do we have any confidence in Charlie? Like, why are we marking it? Just because we feel nota generally answer नहीं होता, right? लेकिन कहीं ना कहीं होता भी तो है। Yes. So if it is a standard fact question और इसमें कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं क्वेश्चन में, स्ट्रेट क्वेश्चन है ये एंड स्ट्रेट ऑप्शन है, राइट? तो अगर नोटा में दिल नहीं हो रहा ना तुम्हारा, तो तुमको चार्ली भी नहीं जाना चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज नोटा, और एल्स इफ यू से कि दिस इज विद इन योर रिस्क टेकिंग एपिटाइट, then it's fine, then it's a different matter. That's it's not personal call, strategy पे depend करता है फिर। Just to consolidate it, I think एक बार nota immediately after this question, I'll just go through nota tags and just see where I'm prone to make this mistake. Yes. I'll do that. Just see in how many of these are standard fact questions, and in how many questions, like why is nota the answer, or if you are in doubt between two options in those questions, why are you going for the other question? If it is just because nota is not the answer, then it is not a sufficient reason to go for that option. Yes, sir. We'll do it. Thank you. Ankit. So I also had the same problem. I did not want to go with D, so I went with C. But why I went with C? Because when I started reading this question, I read every option very carefully, right? Finance Commission. So first option, it encourages inflow of foreign capital for infrastructure development. I know it's talking about something FDI and all. So Finance Commission is not. So I'm getting trapped now. कि ये तो नहीं है. Now I'm getting to the next option. It facilitated the proper distribution of finances among the public sector. I know it distributes the center state, but अगर public sector होता तो would have heard लगाता है यहाँ पे. तो sir, it ensure transparency in financial. I thought कि यार इसको गलत कैसे बोल दूं मैं? नहीं करता होगा. Finance Commission is not like CAG kind of body, na? Yes, exactly. Yes. What do we know about Finance Commission? सिर्फ devolution of funds, main चीज यही है ना काम इसका. Devolution of funds is the main work, right? Correct. A, B, C में से कोई भी उसमें आ ही नहीं रहा है devolution of funds. Devolution of funds से transparency थोड़ी होती है कि नहीं? But sir, I know, correct. मैं तो वो भी समझ गया कि I have to go through all the nota questions. But what I thought कि उस समय मैं ये सोचा कि यार इसको क्या तो फिर कहते it does not ensure transparency in financial international administration. मैं ये इस तरीके से चला गया. Yes, it does not ensure. उसका काम ही नहीं है. अगर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना तो हर 5 साल में क्यों होगा यार? फिर तो हर साल रेगुलर चाहिए ना बॉडी हमको. अच्छा, यस हो गई. फिर कैग है, यस सर. है कि और इंश्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, यार अरे बहुत मोटी मुर्गी है ये चीज यार. इसको कैसे मिस, वुड हैव हर्ड चीज है ये. सर मोटी मुर्गी तो है, पर जो फाइनेंस कमीशन है मोटी मुर्गी नहीं, मोटी मुर्गी. हाँ
जो भी है सर, हाँ फाइनेंस कमीशन मैं क्योंकि उस समय मैं और फिर नोटा में मारता नहीं तो सर, और एनसीओर्स वर्ड देखकर उसका सॉफ्ट मैकेनिकल, है। वो तेरा मैकेनिकल, हाँ देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत फंसा रहा है तुमको, ठीक है। यूपीएससी, व्हाई इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? बिकॉज इट विल invite you with the question statement, which of the following with reference to Finance Commission of India, which of the following statements is correct? Okay, ये question statement पढ़ते ही मन में लड्डू फूट जाएगा पेपर में। Okay, you will not be able to not read the statements. You will naturally, and you must, right? It seems to be a pretty doable kind of question, at least Yes, from the sir. question statement. अब जैसे ही statements पढ़ने लगोगे तो वहां पे दिक्कत होने लगेगी यार, कि ये तो सुना नहीं। And then डेल्टा में the worst thing is डेल्टा में नोटा दे दिया। अब ये पता है कि नोटा is only correct in about 30% cases, और ए बी तो हटा दिया, लेकिन सी और डी, सी सो वाइड, सी सो इनवाइटिंग, सी सो, हम आंख बंद करके सी पे जाने, मतलब वी विल नॉट थिंक ऑफ द लॉजिक कि ensures transparency. That's a continual thing. That's not something which can happen only in points of time, and that also like 5 years, right? There can be multiple reasons, multiple ways of thinking, वो एक अलग बात है, but this is also a very strong would have heard option, right? सर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो शायद बेटर ऑप्शन होता। हाँ, but transparency is surely very formal part of it. हाँ सर एडमिनिस्ट्रेशन सर मिनिस्टेरियल वर्क हो जाता है। Ministerial also, and there are like multiple मैंने बता दिया ना, it is how you think about it. Different approaches can be there, but then you have to keep your nerves cool. You have to see where nota is not, तो ये study कर लेना एक बार, थोड़ा सा ये help हो जाएगा तुम्हारा when you see। नर्व्स तो कूल ही था, फिर भी गलत हो गया। हाँ तो ये प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी घर पे बैठ के डर रहा था सर, मैं सोच नहीं पाया, ये प्रॉब्लम है। बस ठीक है, फिट है, फिर तो टेंशन की बात नहीं है। ओके, प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी। यस सर, यस। व्हाट एल्स? Nothing. So thank you for joining, guys. We'll stop tonight and we will do questions 51 to 100 tomorrow. Do share your feedback about today's class, what you like, what you don't like, how you want the class can change. We have to manage everything in a 2-hour class only. So, suggest accordingly, and whatever you people suggest, I'll try my best to implement. तो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे हम, जो रह छोड़ दिया था हमने? कौन सा क्वेश्चन डिस्कस? ओहो अच्छा, अच्छा, Simple question, technical answer. Okay, रुको, I'll stop the recording now and I'll restart it and make it a training session. Okay, 1 sec. बच्चे क्लास छोड़ के भाग गए क्या? 1 सेकंड रुको।